काही वर्षांपूर्वी टाइम्स वीकमध्ये परत आहे, पुणे टाइम्स वीकमध्ये पुन्हा म्हणजे आधी चालली आहे. आणि तेव्हा मी दुसऱ्या डिझायनरसाठी चालत होते, पण तेव्हा मी जेव्हा श्रुती मंगेश यांचे डिझाईन्स आणि त्यांचा जो शो बघितला तो इतका मला ग्रँड वाटला आणि इतका इट वॉज सो अमेझिंग. एवढा ड्रामा होता त्यांच्या शोमध्ये, हे बघून मला खूप कौतुक वाटलं त्यांचं. मला नेहमी वाटायचं की कदाचित आपल्या पुण्यामध्ये त्या तगडीचे किंवा त्या लेवलचे कदाचित डिझायनर्स आहेत की नाही याची शंका होती, पण श्रुती मंगेश ती पूर्णपणे पुसलेली आहे. वी आर इक्वली तोडीचे डिझाईन्स असतात आणि डिझायनर्स आहेत पुण्याकडे, आणि ह्याचा मला खूप खरंच अभिमान आहे. आणि खूप छान असा गाऊन त्यांनी डिझाईन केला आहे. आणि आमचा जो थीम होता तो पुण्याचा नाईट लाईफ होता, आणि इट वॉज व्हेरी वॉट इज से रेस्टॉरंट्स आपल्या पुण्याचे खूप दर्जेदार असतात. आणि दरवर्षी आम्ही जेव्हा टाइम्सचे रेस्टॉरंटच्या अवॉर्ड फंक्शन येतो तेव्हा मला कळतं की बाबा पुणे एवढे नवीन रेस्टॉरंट्स आले आहेत आणि त्यात तगडीचे असतात. पुण्याचं सोशल लाईफ, पुण्याच्या लोकांना, पुणेकरांना बाहेर जाऊन जेवणाची खूप म्हणजे खूप हाऊसेस दे ऑल व्हेरी काय म्हणतात आउट गोईंग नक्कीच. आणि म्हणून हा जो थीम होता ह्यांना सगळे मॉडेल्स नव्हते तर रेस्टॉरंट ओनर्स या शोमध्ये होते. त्याच्यामध्ये बरीच महिला होते आणि सुंदर सुंदर महिला, आणि ते ऑल वर अमेझिंग. आणि त्यांनी रॅम्प ऑन केलं, खूप सुंदर सगळ्या दिसल्या रॅम्पवरती. इट वॉज अमेझिंग आणि खूप छान छान झालं, खूप एन्जॉय केलं. तो बबल वीक इट्स आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि 15 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं, एंड आई बिलीव एवरी ईयर यू टेक केयर ऑफ दिस. आप ये जिम्मा उठाते हैं, तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड ऑल्सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि जब भी फ़ोन या जब भी सोशल मीडिया कुछ भी आप खोलो तो आई थिंक द न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट पूना टाइम्स वीक एवरीवेयर. सो दिस इज़ अमेजिंग, इट्स रियली नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. उसमें आपने दीवा जो डिज़ाइनर है मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट की थी, इससे पहले की थी? नो, दीवा इज़ द पैजेंट जो अंजना और काल मैस्कुलिनिस का है. मैं इनसे इनके साथ 10 साल से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ और बहुत बार मैं इनके लिए आ चुकी हूँ, इनके पैजेंट्स के लिए जजिंग के लिए और ऑन द पैनल and as a celebrity guest. I have been associated with them for a very long time. They have become very dear friends of mine. And जो डिज़ाइनर थी वो वी ब्राइडल्स की वर्षा जी हैं और उनका कलेक्शन था. एंड इन लोगों का जो पैजेंट है दे इनकरेज women from different fields to excel and come out there and get the validation that they need to get. तो वो उनको प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे उनको एक रिकग्निशन मिल सकता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने टैलेंट को या अपने आप को शोकेस करने का. तो वो इनका पैजेंट है. एंड आज वही लड़कियाँ वॉक उन्होंने किया है एंड दे वर लाइक प्रोफेशनल मॉडल्स. सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल टू सी देम एंड रियली ब्यूटीफुल टू ऑलवेज बी अ पार्ट विद देम बिकॉज लाइक आई सेड अब दोस्ती अच्छी हो गई है हम लोगों की, काफ़ी साल से एसोसिएटेड है. तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके? बस मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी पुणे टाइम्स फैशन वीक को कि मुझे मौका दिया आप लोग सबके साथ जुड़ने का और यहाँ पे आने का. आई हैड अ ब्लास्ट वॉकिंग द रैम्प. आई हैड रियल फन and You also had a blast having it here. Always. So yes, the fun continues till the next time. Thank you so much. And Ritu live up to our catch line, which is dare, dream, and she certainly dazzled and blew everybody away. Thank you. Thank you. Thank you. आप मैम कुछ बताइए ना. जी, जी. So Diva pageant started in Pune in the year 2016 and since then it's almost a decade. आज एक decade हो रहा है. पिछले 10 सालों से दीवा पैजेंट्स के माध्यम से शादीशुदा महिलाएं डिवोर्स्ड, चाहे वो डिवोर्स्ड हैं या फिर विडोड है, उनको चांस मिलता है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपने टैलेंट को आगे लेके जाए, अपने अंदर की क्वीन को डिस्कवर करे. एक रेजिडेंशियल पैजेंट होता है जहाँ पे वो 4 दिन आते हैं, हमारे साथ रुकते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं. तरह तरह की ट्रेनिंग रहती है जिसमें रैम्प वॉक रहता है, बॉडी लैंग्वेज रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहता है. तो ये सारे स्किल्स वो सीखते हैं और फिनाले ऑफ कोर्स पे वो अप्लाई करते हैं जिसमें वो एक मिसेस इंडिया या मिसेस महाराष्ट्र के क्राउन के लिए मेहनत करते हैं और यहाँ से आगे जीतने के बाद इंडिया को भी रिप्रेजेंट करती हैं दीवा पैजेंट की क्वींस, चाहे वो मिसेस यूनिवर्स है या क्वीन ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे करके बहुत सारे पैजेंट्स हैं जिसमें वो आगे जाके अपना नाम कमाती हैं और एक अच्छी पहचान बनाती है इस सोसाइटी में.
यहाँ पर कितने आर्टिस्ट ने अभी सहभाग लिया तो आज हमारी 35 दीवा क्वींस ने वॉक किया है और इनमें काफ़ी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस वुमेन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सोशल वर्कर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं। इन सब ने मिलके आज पुणे टाइम्स का रैंप वॉक किया है और इतने बड़े स्टेज पे आज वो चली हैं सबके लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। Okay, ready? रेडी। So, प्रियंका बताइए आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पुणे टाइम्स फैशन वीक में, और रैम्प पे जब आप उतरी, आप यू लुक वेरी ब्यूटीफुल ऑन रैम्प, सो मच ऑफ ग्रेस एंड सो मच ऑफ एलिगेंस। क्या बोलना चाहेंगे आज के कलेक्शन के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा रैम्प वॉक करके। आई वॉज वॉकिंग फॉर INS और इतना बडिंग टैलेंट और यंग टैलेंट, यंग डिज़ाइनर्स, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें सपोर्ट करके। आई मीन यू कैन सी द आउटफिट, इट्स वेरी न्यू, इट्स वेरी जेंजी, डेनिम में आउटफिट है और अपने स्ट्रगलिंग डेज याद आ गए जब मैं टीवी भी कर रही थी, आई वाज लुकिंग फॉर वर्क, और अपने टीवी डेब्यू और OTT डेब्यू का टाइम याद आ गया। और बहुत हमें यंग डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करना चाहिए और इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। एंड आई थिंक द लुक दे क्रिएटेड इज़ वेरी प्रिटी, वेरी यंग, और बहुत मज़ा आया रैम्प वॉक करके। और कुछ पूछना चाहेंगे? मैं अभी ऑलमोस्ट कवर हो गया? पूछेंगे तो आप भी आपको पूछिए। फुल लुक लेना? हाँ, आप उनको Molly on a stone. This is inspired by Claude Monet's painting, which is the model. So as you can see on the garment as well, the Monet's painting effect you can see clearly. There are little trees over here. There are water ripples. You can see some glimmer as well. That's why we use a lot of crystals, which is very subtle, but you can see the hint as well. So it is like a collection, a art which is alive in front of her. You can see her. It's like walking art, and she has drawn the garment really, really well. It's like looking very beautiful. So we are really, really glad that you put this and you become last woman on this film. Thank you so much. Thank you so much. पर आई हैं पुणे टाइम्स फैशन वीक में, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, और ये जो पूरा कलेक्शन है INSD के टैलेंटेड डिज़ाइनर्स का, तो हाउ आर यू फीलिंग वेयरिंग व्हाट यू वेयरिंग? One word, fab. See, it's also important that the budding designers get an opportunity to get a push, be more confident. So, of course, you feel responsible as an artist, as an actor, when they choose you to be the showstopper, to be as great as possible, because at the end of the day, more than you, it is their designs on floor. So, it has to be expressed beautifully, and that is what I keep in mind when I'm there. So I remember an instance when it's obviously the first time for them, and being supported by the institute is a great initiative, and I completely applaud that. So I remember this instance which I would like to share, that I remember telling them that do not get worried, do not get scared. Don't worry, it will be a fab show, and that is exactly what you saw inside. And I'm really very happy that the audience had a great time. So I love you guys. Thank you for always being with me, for supporting me. And I love the designers. Their clothes were fab, and I love it. So please, okay, so starting with the designer, please tell us about the collection. What was the collection called, and how do you how did you envision Hunar Ali wearing it and representing it so beautifully, getting it to life on the ramp? Loud, ma'am, loud. You'll have to be loud. Actually, this is maximalist opulence collection, like glamour, romance, sub involved. So the collection is called as maximalist opulence, which is inspired from the crystal aura, and we try to create a look which we can do a building even. Studded corsets and fluid drapes, creating a look at me ensemble for the targeted women. And we are completely justified the garment. We are really thank you, and we are happy to have you. Thanks a lot. I love you guys. अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी यार? Really, I mean, I'm very happy. I feel very blessed. I feel very grateful. Thank you, Babaji. Thank you, you guys. Thank you to all of you to be here and support. And I love Pune Times and Bubble Communication, जिन्होंने ये पूरा
ऑर्गेनाइज किया इतने अच्छे तरीके से. Thank you for having me on board. A special thanks to Pune Men's Fashion Week for providing this huge platform, a big platform to students at such early young age, because it takes a lot of time, dedication and consistency of hard work to get there, but our students at such young age are already there. So this is so thoughtfulness of Pune Men's Fashion Week as well as IMS Skill Connected. So we are really grateful to both the parties and we are extremely happy and proud of our students. Thank you. Okay.